हेलो पिलाने हेलो एवरीवन एंड समस्त पिलाने वेरी वेरी गुड इवनिंग समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ तो आम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू समस्त पिलाने ऑडिबल विजिबल होची वेरी गुड इवनिंग समस्त को नमस्कार एंड वेलकम ऑल टू आडा 24/7 ओडिया यूट्यूब चैनल समस्त को आडा ओडिया वेलकम मु सत्य सर तो आम मैंने डिस्कसन कर सेवरल टीचर जॉब रिगार्डिंग पेडागोजी डिफरेंट एमसीक्यूज तो जो मैंने भी अच्छा सेसन रे समस्त टिके सेसन को गोटे लाइक एंड शेयर कर दिंतु और चार्टा ग्रुप रे शेयर कर दिए ये तो गोटे शेयर करना चंद्रा गुड़ा गुड इवनिंग नमस्कार जय जगन्नाथ ओके पिला माने तो मैंने डिस्कसन कर पिला माने आपनकर डिफरेंट टीचिंग एग्जाम रिगार्डिंग पेडागोजी सेवरल एमसीक्यूज ओके चलते पिला माने स्टार्ट करिया सेशन स्टार्ट करिया पूर्व आपण मन छोटिया थॉट दे द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज द ओनली की टू ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज कंसंट्रेशन यदि नहीं तो नॉलेज तुम भागी जीव भाग जाएगा नॉलेज आपसे भाग जाएगा तो ही दूर दूर तक भाग जाएगा वेरी गुड इवनिंग नमस्कार जय जगन्नाथ गुड इवनिंग उत्कलनी प्रणाम पिंटू समस्त गुड इवनिंग प्लान चलतु तो एवरीबॉडी लाइक द सेशन विल स्टार्ट द सेशन फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टाइमर भी टाइमर नहीं आज अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन आप आंसर दे दिंतु in a teacher-centered approach who primarily controls the learning process teacher-centered approach रे learning process को control करे कि तो कहि दी पिरे सहज क्वेश्चन टा teacher-centered approach रे जेतु क्लासरूम रे only one hero किए teacher the teacher who directs and leads the learning activities the teacher who directs and leads the learning activities teacher ही करे yes 20 so 2 is the right answer done first question answer दिंतु टाइमर चलछि टाइमर भीतर आंसर दा पेन चेष्टा करंतु एवरीबॉडी शुड आंसर इट समस्त आंसर आसियो दरकार यदि पोल नन पके दवा मुंडी एठी हां क्वेश्चन नंबर 1 लिखाई छै अपन मन पई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए वैरायटी ऑफ टीएलएम एंड ऑडियो विजुअल एड्स इन द एजुकेशन क्लासरूम रे आपण जो टीएलएम यूज करसंती आ विभिन्न प्रकार जो ऑडियो विजुअल एड यूज होउची विभिन्न प्रकार ऑडियो विजुअल एड जो यूज होउची आ द्वारा फायदा कोन होउची त जितले हम टीएलएम यूज करू कि ऑडियो विजुअल एड यूज करू ऑब्वियसली बोल कले भलो हो ना ऑब्वियसली आ द्वारा कौन हुए मल्टीपल सेंस इन्वॉल्व हुए जेहेतु मल्टीपल सेंस इन्वॉल्व हुए क्लासरूम में तो भिन्न भिन्न प्रकार लर्नर अच्छा ना बिकॉज देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लासरूम इट कैटर्स टू द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल एंड एनहांस द अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को कैटर करे और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को कैटर करे और लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करे अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल आर देयर लर्निंग स्टाइल केते प्रकार थाई पारे कमेंट रे कहि परियो जति को लर्निंग स्टाइल बेसिकली लर्निंग स्टाइल तो अन्य प्रकार अछि अनेक प्रकार अछि आ विद्रु को बेसिकली लर्निंग स्टाइल का को जाय चारटा बड़ बड़ लर्निंग स्टाइल शॉर्ट फॉर्म कम को जाय जान जे कि एनीवन हां शॉर्ट रे को से VARK VARK विजुअल ऑडिटरी रीडिंग kinesthetic visual auditory reading kinesthetic V for visual learning style A for auditory R for reading A for kinesthetic so learning by watching or learning by observing CL visual learner style learning by listening auditory learning style learning by reading something
Learning by doing है kinesthetic learning style. There are different type of learners. VARK. जीवा क्वेश्चन नंबर 2. टाइमर इज ऑन. आंसर दबा चेष्टा करंतु. VARK. गुड. Why is considering एते YouTube टाइम लैग एते लैग हे जाउची. मु कहूची तुम कमेंट आउची 48 दिन परे मो कथा बाहर 64 दिन परे. Why is considering the learner's context is important in teaching? पाठ पढ़ार लर्नर रो कंटेक्स्ट को कंसीडर करबा काहे की आवश्यक. It allows the teacher to impose a rigid learning structure. Rigid learning structure तो कदा भी भल ऑप्शन नुहे. पाठ पढ़ाला बेले लर्नर रो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट, लर्नर रूरल एरिया को बिलोंग करछि कि अर्बन एरिया को बिलोंग करछि, लर्नर रो प्रीवियस नॉलेज रो कंटेक्स्ट सब को हमें पाठ पढ़ा इन्वॉल्व करिया दरकार. काहे की इट अलाउज द टीचर टू इंपोज ए रिजिड लर्निंग स्ट्रक्चर. रिजिड तो कदा भी होनी. इट हेल्प्स टेलर इंस्ट्रक्शन टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर. इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस. एटा कदा भी नो नेगेटिव ऑप्शन. इट्स ओनली एप्लीकेबल एटा नुहे. एटा ऑप्शन बी भल लागुची. इट हेल्प्स टू टेलर इंस्ट्रक्शन मीट टू स्पेसिफिक नीड, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर. लर्नर मानकर नीड, एक्सपीरियंस, अभिज्ञता केते प्रकार थाए. भिन्न भिन्न प्रकार छुआ को भिन्न भिन्न कंटेक्स्ट आपण एड्रेस करिया पई एथि लर्नर रो कंटेक्स्ट इंपोर्टेंट. ऑप्शन अछि आपण सिलेबस लिखा अछि मध्ये यूजिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द लर्नर ओडे अछि LTR सिलेबस रो अछि हला. क्वेश्चन नंबर 3 को चलंतु. पढ़ंतु, पढ़ी आंसर द चेष्टा करंतु. टाइमर चलथिला बेले तमे निजे निजे पढ़ी आंसर दियो. आ तमे आउडे जन आंसर देखि कोनी निजे निजे आंसर द चेष्टा कर. नमस्कार सविता. Which of the following is a benefit of using a variety of activities during group planning session? It leads to a monotonous and unengaging learning environment. It promotes active participation, collaboration, and a deeper understanding among learners. It limits the scope of learning by focusing on a narrow range of activities. It is only effective in small group setting. Which of the following is a benefit of using variety of activities during the group learning session? Group learning session में आपण भिन्न भिन्न प्रकार जो एक्टिविटीज करंती, भिन्न भिन्न एक्टिविटीज करा जाए कोन पई. तर भिन्न भिन्न एक्टिविटीज कोन मोनोटोनस करे, बोरिंग करे, हां पिलार स्कोप पर कोन लिमिट करे. केवल एटा स्मॉल ग्रुप पे इफेक्टिव, सब ग्रुप पे इफेक्टिव. आ द्वारा पिला मानकर एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़े, कोलैबोरेशन बढ़े, डीपर अंडरस्टैंडिंग बढ़े. वेरी गुड. चलते क्वेश्चन नंबर 3 तक आंसर बी हो गलानी. आउ बी हो 3 तक बी होगला कौन अच्छे 3 तक बी हेनी कि होगला कौन भासीगला. क्वेश्चन नंबर 4 दिंतु. व्हाट इज ए सब जगह 25टा जाक बी हो तो कौन है से व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन रिगार्डिंग लर्नर्स विथ डाइवर्स एबिलिटीज. भिन्न भिन्न प्रकार एबिलिटी जो छुआ था से नहीं आम जो इनक्लूसिव एजुकेशन सेटअप करूँ. इनक्लूसिव एजुकेशन सब फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन? व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इनक्लूसिव एजुकेशन? इनक्लूसिव एजुकेशन पिला सेग्रीगेट करे. सेग्रीगेट, सेपरेट, आइसोलेट. सेग्रीगेट, सेपरेट, आइसोलेट ऑल दीज आर नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी. सेग्रीगेट, सेपरेट, आइसोलेट ऑल दीज आर नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी. सब जगह बी तुम दे दो ना आगुआ लिखिदे 1 ରୁ 25 बी. एंड ऑफ डिस्कशन. हम यूट्यूब सेशन एंड करदे. हाँ बाकी ऑप्शन पढ़न अन्य ऑप्शन कहीं कटुची चंडाल भाई सब बी कौच टाउटर. ओनली फोकस ऑन आप चंडाल टाउटर कहीदे पार्टी एमती आप कहीपे सर कहली जा कौन कर मजार कर. ओनली फोकस ऑन द एकेडमिक डेवलपमेंट. यस. Exclude students with disabilities. You cannot exclude the students. Here लिखा है include. You have to include the student. How you can exclude the student? Provide a supportive and inclusive learning environment. Yes, you have to provide a supportive environment to the learner. Done. Question number 5. B दे दिया.
भल लगे शुणा ना ये भयंकर छुआ तुम गाड़ी कले कह भल लगे शुणा सर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो प्राइमरी पर्पस कौन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रो प्राइमरी पर्पस कौन सर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फाइनल जजमेंट दिया जाए कि सर फाइनल जजमेंट वर्ड अछि बा एटा समेटिव फाइनल जजमेंट रैंक ये जो लिखा है डिटरमाइन द रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट्स डिटरमाइन द रेडीनेस ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ग्रेजुएशन अच्छा एटा को इवैल्यूएशन चेक करा जाए कहले देखिया एटा ना ड्यूरिंग वर्ड अछि मॉनिटर वर्ड अछि फीडबैक वर्ड अछि प्रोसेस वर्ड अछि बोल तुम फॉर्मेटिव कहत एटा कोन हो ऑप्शन डी टा फाइनल जजमेंट और रैंक अछि तुम समेटिव कहले ठीक अछि अछि त को बीवा महेंद्र मते डी आंसर को determine the readiness of a student for graduation placement very good अंगमित्रा अणिग्राही गीतांजलि साहू very good placement it was placement part of your placement evaluation right चल आंसर बी तो थिला बी दे दिया आंसर बी दे दियो और बी दे दियो अगुआ which characteristics is associated with a student centered approach to organize learning which characteristics is associated with a student centered approach to organize learning student centered approach कोटा जो टाइम लर्निंग को ऑर्गेनाइज करू फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक कंटीन्यूअस तो स्टूडेंट सेंट्रिक कोटा रा भीतर स्टूडेंट सेंट्रिक हो आपनकर फॉर्मेटिव स्टूडेंट सेंट्रिक हो फॉर्मेटिव समेटिव नुहे स्टूडेंट सेंट्रिक फॉर्मेटिव हला सर फॉर्मेटिव रो पार्ट टा डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट all both two are part of formative yes of course आंसर बी नुहे बी है जे ऑटोमेटिक समेटिव हो टीचर सेंटर समेटिव कोन टीचर सेंटर बी रह जाई छी अब माने कहले बोली बी है जे आंसर ए फॉर्मेटिव क्वेश्चन नंबर 7 कोन which statement best describe assessment as learning which statement best describes assessment as learning it focus on evaluating the final outcome of learning it involves students actively monitoring and reflecting on their own learning process it is solely conducted by the teacher without student involvement it is primarily for grading purpose filter pedagogy आसीबो नी filter मैंने pedagogy आसीबो प्राइमरली ग्रेडिंग पे यूज करा जाए हाँ सर ग्रेडिंग और फाइनल जजमेंट जो अच्छी और ओनली टीचर इन्वॉल्वमेंट जो अच्छी ए सी डी ये तीनटा जो कहूँ सर आमर समेटिव रो कौन क्राइटेरिया बा समेटिव रो कैरेक्टरिस्टिक्स समेटिव रो कैरेक्टरिस्टिक्स चलिए आंसर हो आपनकर बी असेसमेंट आज लर्निंग माने आपनकर सेल्फ असेसमेंट बा पीयर असेसमेंट जोटी ओन लर्निंग प्रोग्रेस को हमें असेस करू इट हैज ए सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ मॉनिटरिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन सेल्फ मॉनिटरिंग all these are part of your assessment as learning चलो क्वेश्चन नंबर 8 को चलतु 8 नंबर क्वेश्चन इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव हाउ इज सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग टिपिकली अप्रोच्ड थ्रू रोड मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड स्ट्रक्चर्ड लेसन्स बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड कंस्ट्रक्शन नॉलेज रिलेटेड टू सब्जेक्ट बाय स्ट्रिक्टली अधरिंग टू ए प्रीडिटरमिन्ड करिकुलम जो में रोड मेमोराइजेशन करू घोषाऊ पिला को फैक्ट और इनफॉरमेशन एटा तो कदा भी सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच में लिखा है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव सर कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव रे सब पिलार एक्सपीरियंस को हम इन्वॉल्व करू पाठटा को पिलार रियल लाइफ सहित जोड़ू पिला को एक्टिवली इन्वॉल्व करू एंगेज कराऊ पाठ पढ़े पिलार इन्वॉल्वमेंटा ऑप्टिमम थाए मैक्सिमम थाए
जो पिला नॉलेज कंस्ट्रक्शन करे बाय इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटीज बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बाय प्रोजेक्ट मेथड बाय इंक्वायरी मेथड बाय इंडक्टिव मेथड बाय एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन मेथड बाय डिस्कशन मेथड लैबोरेटरी मेथड स्ट्रिक्ट गाइडलाइन स्ट्रिक्ट वर्ड नेगेटिव स्ट्रिक्ट वर्ड तो नेगेटिव पेडागोजी हटाओ इसको बाय एंगेजिंग स्टूडेंट्स in active exploration and construction of knowledge related to the subject. Yes. Answer C. Question number 9. Which of the following is an example of a formative assessment tool? Quota formative assessment tool lo gote example ote final exam at the end of the course, a pop quiz to check understanding after a lesson, a standardized test administered at the beginning of the school year, a comprehensive project due to at the end of the semester. Which of the following is an example of formative assessment tool? What formative assessment tool le jauchi? The formative assessment tool re final exam at the end, standardized test, project puni end lekha hai A C D end mane sesha mane summative. A C D all are the part of summative assessment. Answer this B. A pop-up quiz, understanding after a lesson, quiz, discussion, classwork, all these are part of your formative. चलो क्वेश्चन नंबर 10 10 नो क्वेश्चन आंसर दियंतु पढ़ी के आंसर दियंतु पॉपअप क्विज माने मजे मजे जो क्विज करा जे बेले बेले व्हाट इज ए की बेनिफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस इट रिड्यूसेस द नीड for teacher involvement in assessment process. It engages to take responsibility for their own learning and promotes reflection on their strengths and areas for improvement. It results in a competitive learning environment with limited collaboration. It is exclusively solo on focus on the final outcome of the learning process. Assessment it is pure assessment or self assessment. Assessment is the teacher involved. So pure assessment self assessment kahin go? The summative wala. Exclusively focus on the final outcome. The final outcome कहाँ पर focus कर? Summative. पचास self assessment, peer assessment कथा, summative कथा पचार नहीं. तो self assessment, peer assessment टाइम में वार लगता है self reflection हुए, self monitoring हुए, self analysis, self regulation, self motivation बेसी बढ़े. कोटी self assessment और peer assessment. इस option दे it encourages students to take responsibility for their own learning and promotes reflection on their strength and areas for improvement. It is called as formative. But self assessment or peer assessment भी formative part. Very good. आंसर जो मन सब दो चो बी आंसर दे चो बहुत सारा पिला माने पिनाकी रियल क्वीन शांति श्री चित्तरंजन कसिंदु अलिवा अंजलि वनलता चिन्मयी आर्ट एंड क्राफ्ट एली चित्तरंजन समस्त ना तो पढ़ी पाने समस्त पिला माने वेरी गुड 25 जाक भी तुम 25 जाक आंसर दे दो ना चित्तरंजन What is the primary focus of creating a test blueprint? Test blueprint काहे की तैयारी करा जाए? First blueprint को कौन कहा जाए otherwise? What is the other name of blueprint? Anybody? Read in the comment. To randomly select question from the question bank. To ensure a balanced representation of content and skills. To set strict time limits for each section of the test. To determine the overall difficulty level of the test. What is the primary purpose of creating a test blueprint? Test blueprint बनेवार primary purpose कौन? What is the other name of other name कौन? Other name commenter कौन? What is the other name of a blueprint? Commenter कौन? Blueprint is otherwise called as 3D table of specification. Very good. Priyanka. 3D table of specification. Blueprint otherwise called as 3D table of specification. Commenter करो what are the 3D? 3D कौन? 3 का dimension कौन? What are the 3D of a blueprint? Write down. Blueprint type of question type. One type of question type. It is to ensure balanced representation of the content and skill. Content of skill balance maintain होइबो.
क्वेश्चन पेपर कंटेंट वैलिडिटी मेंटेन रहिबो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मेंटेन रहिबो 3 डायमेंशन व्हाट आर द 3D 3टा डी कोन राइट इन द कमेंट आंसर दे जल्दी कम आंसर दे लेंथ ब्रेड्थ हाइट कौन लेंथ ब्रेड्थ हाइट मो ब्लूप्रिंट ए माने पड़ो और ब्लूप्रिंट रो जो 3टा डायमेंशन सेटा कोन जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट कोन छुआ अंडू अरे ब्लूप्रिंट रो 3टा कोन कह हाइट ब्रेथ लेंथ अच्छा सी लेंथ ब्रेथ हाइट कह तुम हाइट ब्रेथ लेंथ कह लो वाह वाह सोच गजब की चिंताधारा हाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रियंका गुड कंटेंट ऑब्जेक्टिव गीतांजलि डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया डिस्फाजिया ए मारी माने पसी पूरा इंजन डिक्टर सकियो आउटर गुडा कंटेंट ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंथ ब्रेड्थ हाइट वाह LBH शॉर्ट रे वाह छुआ धन्य रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिव नुह सब जाक मूर्ख बी आंसर दे खाली खुशी हो तो कही पारन आंसर तो एक्सप्लेन कर पारन तो कही तुम जो कमेंट सेक्शन में आंसर दो होमवर्क एक्सप्लेन करन कज कौन कारण कह पूरा एक्सप्लेन कर लिखिदे कौन भासी जाऊँगी इंस्टा क्या गोटे मेसेज कर एत मेसेज कर दो इंस्टा व्हाट्सएप लिखि दौ रेवती गप 3D टेबल 3टा 3D गोटे हूँ आप कंटेंट वन इज कंटेंट और हूँ ऑब्जेक्टिव भलसे लिख कंटेंट कंटेंट देन ऑब्जेक्टिव व्हाट इज पेडागोजी the art and science of teaching, the way of teaching, how you are handling the class, how you are managing the class, how you are understanding the student, how you are dealing with the students, how you are approaching the parent, what are the method of teaching, how you are applying TLM, how you are assessing the learners in the class. Hello? Aku ko je pedagogy. Bujhila sepun 3D. There are 3D. मुझे जानी मु तो महादेश जो आसी कौटू मंगल ग्रह मुझे जाननी इष्टा कथा क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज आज एक कोड़ा गले कौन व्हाट इज ए की कंसीडरेशन आरके ताना एक कौन पूछ व्हाट इज ए की कंसीडरेशन when preparing test item what is a key consideration while preparing test item बनेला बेले आम की कंसीडरेशन कौन करवा कौ जिनस को आम गुरुत्व दबा मेकिंग श्योर ऑल क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू टेस्ट द limits of the students knowledge ensuring that questions are clear concise and free from ambiguity including personal opinions or bias in wording the question using complex language or jargon example के दे पे माने jargon को technical language बोली कहा जाए what is the example of jargon complex language काई यूज करबा personal opinion काई दबा ensure कर जे क्वेश्चन टा क्लियर लिखा है जी कंसाइज अछि आउ क्वेश्चन किछि ambiguous आइटम बा कंफ्यूजिंग आइटम नाही कौन से अननेसेसरी मान क्वेश्चन दे गोटे बहुत गोटे बेड बैच रे क्वेश्चन दे कोणार्क केउठी सब पूरा आम्बिगस क्वेश्चन पूरा छुआ लगे कोणार्क आम गाँ पटे कोणार्क एपटे कोणार्क मो बारीपट पटे कोणार्क मो पछपटे कोणार्क बाहर ओडिशा केउ सहर केउ जगार केउ स्थान उपस्थित एटा कह केउ सहर उपस्थित एटा क्वेश्चन एटा कर कोणार्क आम गाँ झापड़े पटे लिखिदे ambiguous question बनाना where did Gandhi born is not a good form of question गांधी केउठी जन्मग्रहण करथिले गांधी छुआ हॉस्पिटल ले कि गाँ रे होए इन व्हिच सिटी ऑफ इंडिया गांधी वाज बोर्न
हम घर आगे हाँ जार्गन एग्जांपल कहले देखिए पे मैंने व्हाट इज जार्गन जार्गन माने टेक्निकल लैंग्वेज जोटा यूज करा जाय आपनकर कोडी टेक्निकल लैंग्वेज जोटा यूज करा जाय माने पर्टिकुलर फील्ड रे माने मेडिकल फील्ड रे कि मानकर लॉयर बाय एलएलबी तू करछु सिटी गोटे किछि वर्ड था जेमति कि बेल एंटिसिपेटरी बेल फाइल हला पिटिशन फाइल हला पिटिशन लॉयर लॉ फील्ड रे अप्लाई करा जाय दिस आर द स्पेसिफिक वर्ड इन पिटिशन हला बेल हला ऑल दिस वर्ड आर एप्लीकेबल इन कोडी इन लॉ फील्ड ताको जार्गन इन लॉ फील्ड बेल को जाय कंप्यूटर रे जो वर्ड यूज करा जाय कंप्यूटर में यूज करा जाय यूएसबी हला कि पोर्टेबल कैमरा हला एडा सब यूएस कंप्यूटर में यूज करा जाय सिस्टम सेटा डिजायर करला जार्गन आंसर बी हबो क्वेश्चन नंबर 13 which statement best describe a key difference between standardized test and teacher made test standardized test और teacher made shortcut नुहे जार्गन माने शॉर्टकट नुहे पर्टिकुलर वर्ड यूज फॉर पर्टिकुलर फील्ड मेडिकल किसी शब्द यूज करा जाए मेडिकल ही यूज करा जाए टीचिंग किसी शब्द था टीचिंग ही यूज करा जाए पर्टिकुलर वर्ड्स आर यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर फील्ड सॉफ्टवेयर पे वर्ड किसी था सॉफ्टवेयर ही यूज करा जाए व्हाट इज द व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द की डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज्ड एंड टीचर मेड टेस्ट प्रथम कथा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट रो डिफरेंस समान सब कहबो पहले देखिए सब मते को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट डिफरेंस जल्दी कमेंट करो स्टैंडर्डाइज्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट केते टीचर मेड नंबर ऑफ स्टूडेंट केते माने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग द एग्जाम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग द एग्जाम स्टैंडर्डाइज्ड रे केते टीचर मेड टेस्ट रे केते नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग द एग्जाम चाहो आंसर दियो ए हो कि सी हो डी हो आंसर बी हेले बी आंसर दबो नहीं पुष्पा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स केते जल्दी कोंतु स्टैंडर्डाइज्ड रे टीचर मेड टेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग द एग्जाम केते कोथरे अनलिमिटेड कोथरे लिमिटेड अनलिमिटेड कोथरे लिमिटेड कोथरे जल्दी एग्जांपल दो देखिबो ना एते समय लानी स्टैंडर्डाइज्ड रे संख्या अधिक नॉन स्टैंडर्ड रे कम गोटे क्लास रो छुआ गोटे क्लास रो ही स्पेसिफिक छुआ हला कोटा को बोर्ड बेस एग्जामिनेशन बेल को जाय बोर्ड बेस आंसर तो बस एस लिखियो ना से टी लिखियो व्हिच इज बोर्ड बेस एग्जामिनेशन कोटा एस ना टी नेक्स्ट क्वेश्चन है कोथरे पिला माने रैंकिंग आसे कंपैरिजन आसे कोथरे रैंकिंग आसे कंपैरिजन आसे बा कोटा हो टीचर सेंट्रिक कोटा स्टूडेंट सेंट्रिक आंसर दियो जल्दी आंसर दियो जे जानि छ स्टैंडर्ड जे आंसर देखु तो बी कहि दो आंसर दियो बी वेरी गुड पुना वाक्य लिखि परनु ना scored in a consistent manner across all test takers teacher made test particularly गोटे ग्रुप में एडमिनिस्ट्रेशन मेथड वैरी करे मु मो क्लास में क्लास टेस्ट कर मो मेथड अलग तू तो क्लास में करू तो मेथड अलग टीचर मेड टेस्ट में वैरी फ्रॉम टीचर टू टीचर may vary from school to school may vary from class to class what type of reinforcement schedule is to reinforce each correct response for a learner in operant conditioning आंसर दियंतु फिक्स्ड इंटरवल वेरिएबल इंटरवल फिक्स्ड रेशियो कंटीन्यूअस शॉर्ट लिखो ना टी लिखो जाए ता सहित का सहित कनेक्टेड हो आंसर सेटा लिखियो ना नहीं कल झगड़ा कौन करछु कली कौन करछु मु कहली बोली व्हाट टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट शेड्यूल इज टू रिइंफोर्स ईच करेक्ट रेस्पॉन्स ऑफ द लर्नर प्रति करेक्ट रेस्पॉन्स पे जदि आपण स्टैंडर्डाइज चाइल्ड सेंट्रिक नुह स्टैंडर्डाइज चाइल्ड सेंट्रिक नुहे संग मित्रा स्टैंडर्डाइज टीचर सेंट्रिक टीचर मेड टेस्ट चाइल्ड सेंट्रिक स्टैंडर्डाइज समेटिव टीचर मेड टेस्ट कैन बी फॉर्मेटिव हला सर एटा को जे कंटीन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल कोना को जे कंटीन्यूअस आउट क्वेश्चन को मते स्टैंडर्डाइज टेस्ट केते प्रकार आ कोन कोन रिप्लाई दि
स्टैंडर्डाइज टेस्ट केते प्रकार कौन कौन कमेंट सेक्शन लिख जल्दी लिख ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन व्हिच क्वेश्चंस आर सिमिलर इन डिफिकल्टी लेवल बट मोर इंपोर्टेंस गिवन टू द टाइम लिमिट क्वेश्चन जो सामान थाए किंतु टाइम लिमिट पर अधिक गुरुत्व थाए ताकू को क्वेश्चन को टेस्ट बोली कह जाए स्पीड टेस्ट पावर टेस्ट वर्बल टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट टू टाइप जे कौन कौन बोली कह सदेव प्रियंका कौन कौन बोली कह गोटे कमेंट लगे एत कर क्लास कर सीआरटी एनआरटी मुझे टू टाइप तो कहदेली तुम कह कौन कौन बोली सीआरटी एनआरटी सीआरटी रे फुल फॉर्म कौन कह एनआरटी रे फुल फॉर्म कौन कह मत कह कौन गोटे फिक्स्ड कट ऑफ थाए आउे वेरिएबल कट ऑफ थाए पूरा मेंशन कर लिख व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआरटी फिक्स्ड कट ऑफ कौन थाए वेरिएबल कट ऑफ कौन थाए मेंशन कर लिख जो टाइम लिमिट पर अधिक गुरुत्व दो स्पीड टेस्ट जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल पर गुरुत्व दिया जाए पावर टेस्ट क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट वेरी गुड शुभस्मिता क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट फिक्स्ड कट ऑफ वेरी गुड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लक्ष्मी प्रिया संगमित्रा सहदेव लला टेंदु प्रियंका कृष्णा सुश्री रंजिता गुड 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 अनुभव पट्टनायक वेरी गुड अनुभव पट्टनायक हूँ कर्म फिल्म डायरेक्टर लला टेंदु महापात्र लक्ष्मी प्रिया कुंडू गुड थ्री टाइप कौट आइला थ्री टाइप कौन कौन सत्यजित कह मत आउ गोटे टाइप कौन रहा वेरी गुड रैंक आसे रैंक दि जाए कंपेरिजन आसे एनआरटी रे एनआरटी कट ऑफ चेंज हुए आरएसटी एग्जाम दो जेटी एग्जाम सब एनआरटी ओटीटी सीटीटी सब सीआरटी स्पीड टेस्ट है क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट पिलार गोटे पर्सनालिटी आसेस करिवार गोटे गोटे सब्जेक्टिव मेथड नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन ऑटोबायोग्राफी वर्ड एसोसिएशन सब्जेक्टिव मेथड कोटा नुहे नुहे सब्जेक्टिव कही ऑब्जेक्टिव मेथड कोटा ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्टिव हो पारे इंटरव्यू सब्जेक्टिव हो पारे ऑटोबायोग्राफी सब्जेक्टिव हो पारे वर्ड एसोसिएशन सब्जेक्टिव हो पारे बट ऑब्जर्वेशन ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 17 मिनल इज एवरेज इन इंटेलिजेंस लो इन क्रिएटिविटी हाई इन एडजस्टमेंट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मिनल बोले गोटे छुआ तार इंटेलिजेंस एवरेज क्रिएटिविटी सस्ता एडजस्टमेंट अधिक मीन गोटे लोक भीतर थिबा व्यक्तिगत परिवर्तन को गोटे लोक भीतर थिबा व्यक्तिगत परिवर्तन को कौन कह जाए गोटे लोक आउ गोटे भीतर थिबा गोटे लोक आउ गोटे लोक भीतर थिबा भेदभाव को कौन कह जाए कह जाए इंटर जनक भीतर थिबा परिवर्तन को कह जाए इंट्रा दी प्रकार आंसर दे दउची इंटर आ इंट्रा गोटे को कहितला पर तापर आउ डिलीट कर दउची पंडा इंट्रा कह जाए इंट्रा माने द चेंजेस विदिन द योरसेल्फ विदिन योरसेल्फ इंट्रा माने विदिन योरसेल्फ इंटर कॉलेज कंपटीशन इंट्रा कॉलेज कंपटीशन इंटर कॉलेज माने गोटे कॉलेज सहित आउटे कॉलेज माने आरडी सहित पीएन कॉलेज पीएन सहित समाज कॉलेज कि भगिया कॉलेज आउ इंट्रा कॉलेज माने गोटे कॉलेज भीतर थिबा मिनिमम ब्रांच सहित कंपटीशन ए आर्ट्स सहित प्लस कॉमर्स होची +2 सहित +3 कि सार मान सहित दीदी मान कंपटीशन ए तो ऑटोक्रेट हाउ यू आर प्रूविंग दैट जस्ट 9 भूल जी कहल 18 नंबर व्हिच टाइप ऑफ करिकुलम डिड ब्रूनर सजेस्ट टू फॉलो द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन कौन कहवा इनक्लूसिव करिकुलम स्पेशल करिकुलम स्पाइरल करिकुलम इंटीग्रेटेड करिकुलम इंटर माने परस्पर सर ब्रूनर देइथिला अंक भीतर कोठी स्पाइरल करिकुलम देसिन कांसेप्ट को कांसेप्ट देसिन स्पाइरल करिकुलम कांसेप्ट सर व्हाट डू बाय स्पाइरल करिकुलम जोडी लेवल बढ़े धीरे 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 लेवल बढ़े सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल हुए एग्जांपल सुख
6th क्लास रे तू अलजेब्रा पढुछु 7th रे भी अछि अलजेब्रा 8th रे भी अछि अलजेब्रा 9 में भी है 10th में भी है 6th क्लास रे तो खाली सिखा जाए एक माने वेरिएबल कोडा कांस्टेंट कोडा ओनली थिंग सिखा जाए 7th रे तो सिखा जाए एडिशन ऑफ वेरिएबल एंड एक्स वाई को मिसेले कोन हो 8 को तो सिखा जाए a + b होल स्क्वायर वाला आसीबो 9th को a + b होल क्यूब a फोर्थ b फोर्थ वाला आसीबो 10th को तो सिखा जीवो लिनियर इक्वेशन को केन सॉल्व करिवो और धीरे धीरे 6th थ्रू 8 10th को जो तो करिकुलम जाई जी धीरे 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 गुड़े 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 छंदी छंदी है पूरा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल को जाई छी देखा जो स्पाइरल बाइंडिंग बढ़िया तो स्पाइरल वर्क दैट इज कॉल्ड एज स्पाइरल करिकुलम डन स्पेशल अछि रे नहीं एटा को क्वेश्चन अछि थिला टाइम थिला एठी क्वेश्चन डिफिकल्ट कथा पचार छी ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन व्हिच डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन ग्रेजुअली इंक्रीजेस द टाइम फैक्टर इज सेकेंडरी डिफिकल्ट लेवल टा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम फर्स्ट थिले स्पीड डिफिकल्ट लेवल बढ़ले पावर कोन कहै ताको पावर टेस्ट 20 number a teaching learning strategy in which a small group of students with a different level of ability use a variety learning activities to improve their understanding of a subject. A teaching learning strategy जोठी small group of student माने different level apply करंती to improve their understanding of a subject. ताको कौन कहे multisensory learning, team teaching, cooperative learning, program learning. What is it called? कदी परी बेटा हाँ ताको टीम कोऑपरेटिव लर्निंग बोली कह जाए टीम टीचिंग कह कि नहीं टीचिंग स्ट्रेटजी इन व्हिच स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लिखा छुआ माने टीचर माने कह टीचर माने मिसी पड़ले तो टीम टीचिंग बोली कह जड़े से टीम टीचिंग कहते बोली तुम सब कहो टीम टीचिंग ना मिसिकी आउ किसी पिला सी कहो बहुत पिला सी कहो आ किछटा बलद गध गुड़ा खाली टीम टीचिंग कह लिखा ग्रुप जो होने ग्रुप ऑफ टीचर्स ए कॉमन सब्जेक्ट ताको तुम कह टीम टीचिंग ग्रुप ऑफ को टीम अच्छी टीम हम सिक्योर ठा 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 सिक्योर कनमुंडिया के 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 ही दौड़ घर आ माला माला सारा माला माला यूट्यूब रे ऑनलाइन बना बाइले there is a small group of students with different level of ability use a variety of learning activities to improve their understanding of the subject ताको हम कोऑपरेटिव लर्निंग बोली कहबा की हबो लिखा जिते लिखा होने ग्रुप ऑफ टीचर्स टीच ए कॉमन सब्जेक्ट होने ग्रुप ऑफ टीचर टीचर्स ए कॉमन सब्जेक्ट ताको तू कह टीम टीचिंग क्वेश्चन 21 अकॉर्डिंग टू पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी cognitive development theory the basic unit of cognitive structure that helps in the implementation of cognitive behavior is termed as dash न कह पहले एमते भूल आंसर देले यूट्यूब ब्लॉक कर दियो आ क्लास देखि परु न माड न खा कौन कहबे तो रिफ्लेक्सेस बेसिक इंस्टिंक्ट स्कीमा कंजर्वेशन ऑनलाइन स्कीमा कह जाए कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को स्कीमा ही कहछन्ती जहा द्वारा मॉडिफाई होय सब स्ट्रक्चर हां and which one of the following is not a direct method of measurement of attitude measurement ro कोटा सीधा सक मेथड नुहे indirect method projection इंटरव्यू तो डायरेक्ट हो क्वेश्चन भी डायरेक्ट हो ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट हो प्रोजेक्शन इनडायरेक्ट तो देखे भी गोटे पिक्चर तो इमोशन को जज करी A horse can be brought near water but cannot be forced to drink. This statement reveals the Thorndike which law of learning? Law of readiness, law of exercise, law of effect, law of multi-response. घोड़ा को आइली गाड़िया पाखकू ताकू पानी पिया पे बाध्य कलिनी पानी पी ताले पानी पी नले नाही तो घोड़ा रेडी नाही पानी पिया पे ताकू लॉ ऑफ रेडीनेस भी लिखा जाए यू कैन नॉट टीच द स्टूडेंट जबरदस्तिया पिला जदी रेडी ना ताकू रेडी करा से थॉर्नडाइक लॉ ऑफ रेडीनेस को लॉ ऑफ प्रिपेयरनेस भी कहा जाए लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाए लॉ ऑफ एंगेजमेंट भी कहा जाए
लॉ ऑफ टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज भी कह जाए, लॉ ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी कह जाए। कौन कौन कहली? लॉ ऑफ रेडीनेस भी कह जाए, लॉ ऑफ मोटिवेशन भी कह जाए, लॉ ऑफ टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज भी कह जाए, लॉ ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन भी कह जाए, लॉ ऑफ एंगेजमेंट भी कह जाए, लॉ ऑफ प्रिपेयरनेस भी कह जाए। मन रखियो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग is not a level of teaching? Basic level, memory level, understanding level, effective level. That there are 3 level of teaching given by Hunt, Hubbard and Morrison. Hunt, Hubbard and Morrison. Hubbard देइछिन आपन मेमोरी, Hubbard Spencer. अंडरस्टैंडिंग देइछिन आपन Morrison. रिफ्लेक्ट देइछिन आपन Hunt. तले आपन बेसिक इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी मु कहि जान मेमोरी कहू आउटर गोटा 3टा लेवल ऑफ टीचिंग बाय एमएलटी यूएलटी आरएलटी। देयर आर 3 लेवल ऑफ टीचिंग एमएलटी यूएलटी आरएलटी। देखिए आरंभ के बी करछि कि तो देखि त मैं कहू छ अरविंद बी कहितले ताको देखि त मैं सब गंड कहू छ। देयर आर 3 लेवल ऑफ टीचिंग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एमएलटी यूएलटी एंड आरएलटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग? गोटे ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग रो गोटे भलो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन? पर्सनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल ना इमोशनल? ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग आर पर्सनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल। ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग रो भलो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन? ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स होची ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग ता सब पर्सनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल था। ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग ता पर्सनल। आई ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग कांसेप्ट किए देसंती? डेविड ऑजुबेल किए देसंती? डेविड ऑजुबेल। ओके डन। अभी छोटिया सेशन अच्छे 9:45 रे 48 तक गलानी आ 10 मिनट लेट रे चलछु सेशन करिया टिके जॉइन करे पिला माने एटा अच्छी कमेंट सेक्शन रे आंसर दियंतु डिटेल आंसर लिखिबे खाली आंसर लिखिबेनी हला आसे तो सेशन लाइक कर दियो पिला माने एटा हो बुक अच्छी अवेलेबल 295 टका प्राइस चलछि 23% ऑफ सब बही रे एलटीआर बही भी 277 टका अछि टेक ठीक अछि कोड देबे लिखा है आपन आखि सामने 5594 एजुकेशन इज द बेस्ट फ्रेंड एन एजुकेटेड पर्सन इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ ठीक बुझिसो भाई कदोड़ा पढ़नो थैंक यू सो मच पिला माने नमस्कार जय जगन्नाथ गोटे छोटे सेशन स्टार्ट कर जॉइन हम जदि भल कथा।